So your life চলে যাও Hyper. সুপার। তো আমি কিছু কিছু জিনিস করেছি, আই উইড লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ। আমি এগুলো সব কালেক্ট করেছি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি অনেক কিছু মানে जिप लाइन्सও লাগিয়েছি। वो भी किया हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक चला जा सकता हूँ अभी, और यहाँ से थोड़ा वॉक कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता हूँ, इतना चला जाता। यहाँ से जाके यहाँ पे मैंने सारे जो मिनरल्स है वहाँ पे ड्रिल लगा दिया है जितना हो सकता था। मतलब कुछ भी मिनरल बाकी नहीं है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। यहाँ से इजीली मतलब सब एक्सेसिबिलिटी इजी कर दिया हूँ मैं। यहाँ से यहाँ पे टीपी मार के यहाँ ये जिप लेके ये जिप यहाँ पे एक जिप है, हाँ ये रहा एक जिप। इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ पे आ सकता हूँ। मतलब सब जगह पे जो ये मटेरियल मिलता है ना, यहाँ पे जाने के लिए जो जो रहता है उसको मैंने ले लिया है और इजी कर दिया है। यहाँ पे आई थिंक यस्टरडे किया हूँ, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ मतलब क्या किया है क्या नहीं, एक ट्रैक रहना चाहिए ना। तो मैंने यहाँ थोड़ा अपग्रेड किया हूँ। ये आई थिंक मैक्सड आउट है आई गेस, हाँ फुल मैक्सड आउट है ये। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग किया था इसलिए मैक्सड आउट हो गया। मैंने यहाँ पे पूरा हटा दिया और फिलहाल तो ये बन रहा है। यहाँ से यहाँ आ रहा है मेडिसिन, उसके बाद यहाँ तक यहाँ पे मेडिसिन, यहाँ पे जनरली ये बन रहा है ये बड़ा वाला, ये मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद पहले भी ये बॉटल आ रहा है 3 बॉटल, ये ग्रीन सॉरी ब्लू, हाँ ग्रीन वाला है। मतलब हमारा कौन सा है श्योर, वेट ऐसे ना जाके ऐसे जाता हूँ। डेटाबेस आइटम्स बॉटल्स कहाँ है, हाँ तो मेरे पास ये बना सकता था पहले, ऑब्वियसली इससे बनता था। अभी मैं ये बना रहा हूँ, इससे बहुत सारे कुछ बनते हैं। ये अभी नहीं बना सकता इसलिए ये लगता है, तो अभी नहीं, ये तो डेफिनेटली नहीं। इसके लिए क्या लगता है, ये लगता है, तो ये नहीं बना सकता मैं। इसको बनाने के लिए ये लगेगा, ये नहीं है मेरे पास अभी, न्यू रीजन में मिलेगा। और ये बना रहा हूँ मैं पावर सेल के लिए, इसलिए अगर पावर सेल देखोगे मेरा बहुत है, 2000 या 3000 के करीब करीब है ऐसा कुछ। के बाद और कुछ मैं ये बना रहा हूँ अभी पावर सेल, ये भी बना रहा हूँ इसी बेस में देखोगे तुम, ये सेल करने के लिए और ये मुझको पावर देने के लिए। ये जस्ट सेल करने के लिए, जो भी बन रहा है वो सेल कर दूंगा पूरा। ये तो अभी बना ही नहीं पा रहा मैं, बाद में बनेगा आई गेस। हाँ ये लगेगा ये वाला, ये बना सकता हूँ। ये तो ये किस लिए है पता नहीं, जो भी है इसका भी होगा कुछ। ये दिखा दूँ, ये रहा पावर सेल बन रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये डिपोर्ट भी मैंने खोल दिया था। और हाँ बता रहा हूँ यहाँ पे बोतल जा रहे हैं, बोतल क्योंकि भाई ये 4 लग रहा है इसको दोनों में बनाने के लिए, ये इन दोनों मेडिसिन को बनाने के लिए 4 लग जा रहा है। और ये फिर जाके 1 to 1 हो रहा है। यहाँ का 4 इक्वल्स टू यहाँ का 2, 1:2 रेशियो में ब्रेक डाउन है ये मेरा। और तुम्हें लग रहा होगा भाई फिर भी तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास ये वाला और थोड़ा कम पड़ रहा है। अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये डिपोर्ट के लिए है, और मैंने ये पूरा कर दिया, ये पूरा कर दिया, पूरा जितना भी है ट्यूटोरियल्स ख़त्म है मेरा। इन लोगों को खोल नहीं पा रहा अभी तो फिलहाल के लिए। और थोड़ा साउंड कमा दूँ, 50 कर देता हूँ अभी के लिए। मतलब तुम लोगों को ठीक ठाक आएगा आई गेस। जो भी है ये गया। और क्या कर रहा था मैं, हाँ चार्ट ब्रो, ये देखो ये बना रहा हूँ, ये यील्ड है देख रहे हो,
240 रिक्वायर्ड है, आ रहा है मतलब पूरा हाफ उसका। दैट्स द रीज़न वो स्लो चल रहा है, नहीं तो अच्छा ही चल रहा था। 1:1 रेशियो में ये है एक, ये थोड़ा अप डाउन कर रहा है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मेडिसिन में लग रहा है, और क्योंकि मेडिसिन में लग रहा है और ओट्स नहीं है तो ऑब्वियसली समझ ही पा रहे हो, मुझे ये चाहिए। ये अप डाउन हो रहा है, कोई बॉटल नेक होगा किसी ये जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पर कुछ और चीज़ का बॉटल नेक हो रहा होगा। और ये तो 1:1 रेशियो में है, वो तो मेडिसिन में ही आ रहा है, ये बोतल का है। एज यू कैन सी जितना लग रहा है वहाँ पर मिल नहीं रहा। ये यील्ड कर रहा है पूरा सेल करने के लिए, ये 187 हो गया है, पूरा सेल कर दूंगा। और ये है जहाँ पर देख सकते हो 4 यील्ड है 4, यूज हो रहा है 5। आई थिंक यील्ड होना चाहिए, देख रहे हो कितना, 18 होना चाहिए, 18। थियोरेटिकल जो होना चाहिए, जो मुझे देना चाहिए वो था 18। मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि ओड्स नहीं है, मुझे स्टोरी प्रोग्रेस करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। 18 ब्रो, 18 मिलना चाहिए, यूज होगा 9, डबल होगा लिटरली, पर नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ स्टोरी लिमिटेशन। और ये तो ऊपर नीचे जा रहा है क्योंकि वही लग रहा है, वही और लग रहा है। और मैंने पूरा, तुम बोलोगे भाई माइंड लगाओ, मैंने पूरा A to Z चाहिए कुछ भी लगा दिया है, मतलब जहाँ पे भी है कोई भी माइनिंग स्पॉट एम्प्टी नहीं है, यहाँ पे भी पूरा है। सारे ऐसे जो भी है, मतलब यही नहीं और भी तो, ये एक है, पर्पल एक है और ब्लू एक है, वो जो 3 और मिले हैं मुझे पूरा लगा दिया है। ये एक पर्पल वाला पूरा, कोई भी एंट्री नहीं है, तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, एंट्री क्या नहीं है, कोई भी लेफ्ट नहीं है कि हाँ ऐसे खाली बैठा है। और ओल्ड वेन मैंने सब कुछ लगा दिया है सही पर। ये एक बेस तो देख ही रहे हैं, देख लिया, ये बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिटरली एम्प्टी कर दिया मैंने पूरा। उसके बाद ये दिखा दो, उसके बाद स्टोरी करता है। ये पूरा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ये लिटरली ये एरिया पूरा बैटरी मेकिंग के लिए, पूरा 99% बैटरी मेकिंग के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पे ये नहीं है, ये कम आ रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ओड्स नहीं है, यहाँ पे ओड ही जा रहा है, तो यहाँ पे ओड नहीं है। पूरा 1:1 आता था भाई, बहुत बहुत सोच समझ के बनाए हुए। ऑब्वियसली इससे अच्छा बन सकता है, पर मेरे पास अभी दिमाग नहीं है कैसे बनाना है वो। ये मैंने एक डिपोर्ट लिया है, यहाँ से थोड़ा स्प्लिट करूँगा थोड़ा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ। यहाँ से क्या है, यहाँ से आ रहा है ये, मतलब ये इनपुट वो कितने रेशियो में तोड़ा हूँ, 2, ये 2.5:2, मतलब 1.5:1 का रेशियो है ये हाफ आ रहा है यहाँ से, ये हाफ आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से एक बार ये जाएगा एक बार ये जाएगा, और यहाँ का जो है वो 2 ही पूरा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से भी, यहाँ से आ रहा है 2 यहाँ पे, और एक का डायरेक्ट यहाँ पे, और हाफ जो आ रहा है एक का, ये भी यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, और यहाँ से भी एक इसका डायरेक्ट आ रहा है। इसका 2 यूनिट, इसका इस मशीन का 2 यूनिट यहाँ से, और इस मशीन का 2 यूनिट यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट। तो ये अच्छा बैटरी प्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट से चला रहा हूँ। यहाँ पे जनरेटर, पूरा जनरेटर यहीं पे है, कोई और जगह पे जनरेटर्स नहीं है। यहाँ पर मेरा जो ये इतना पावर दिख रहा है, यही लिटरली 3K था, अराउंड 3K, 2.9 समथिंग K था, तो 3K ही पकड़ के चलो। अभी इतना चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बैटरी प्रोडक्शन स्लो है। यहाँ से 2 बैटरी आ रहे हैं, और यहाँ इससे 3 को लग रहा है, इसको 3 का लग रहा है, 3 पावर्ड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 पावर्ड हो रहे हैं। ये गया तुम्हारा इस बेस का, मैंने कल ही खोल दिया था। इस बेस को मैच नहीं किया है बाय द वे, तो पहले इसको थोड़ा और मैच आउट कर सकता हूँ। एक ये छोटा वाला ही है, इसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद एक और होगा, कर ही देता हूँ।
थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा। ये कल हो जाएगा आई गेस, कल इसको मैक्स कर दूंगा, वो बड़ा वाला बेस बाद में मैक्स होगा। मैं बोल रहा था ना, और एक भी जगह खाली नहीं है। ये जो सामने और देख रहे हो, होपफुली माउस कर्सर दिख रहा है, ये जो सामने और देख रहे हो, इसको भी मैंने भर दिया है ड्रिल लगा के। कोई भी जगह खाली नहीं है। वो और मिल ही नहीं पा रहा, ब्लू कलर का वो यहीं पे एक मिल रहा है। आई गेस स्टोरी में प्रोग्रेस करूंगा तो और भी वेन्स मिलेंगे, पर यही है भाई, नहीं मिल रहा। उसके बाद ये लगा दूंगा कल, उसके बाद ये ओपन करूंगा और ये भी लगा दूंगा, ये मैक्स आउट हो जाएगा। सब छोटे छोटे लोग, जो छोटे छोटे बेस, छोटे छोटे लोग क्या, छोटे छोटे बेसिस में पहले मैक्स आउट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही जो भी यूजलेस चीज़, यूजलेस नहीं बोलूँगा, मतलब जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं यहीं पे बनाऊँगा। और आर्टिफैक्ट रिलेटेड, मतलब गियर रिलेटेड जो भी चीज़ मैं यहीं पे बनाऊँगा मेन बेस में। गियर या कुछ भी ब्लूप्रिंट किसी भी चुराना है तो कुछ भी ऐसा कुछ जो भी करना है यहीं पे करूँगा मेन बेस में। मेन बेस में एविडेंसी कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। ये भी बंद किया हुआ है, देख रहे हो, क्रॉस है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहीं पे भी और यूज हो रहा है। यहाँ पे एक ब्लू वाला एक और बना दिया है, पावर वाला, ताकि वहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ पे एक और है। ये वाला उतना सोच समझ के नहीं बनाया है, जस्ट सिंपली जो ब्लूप्रिंट रहता है इसका, क्योंकि मुझे मिल गया था, मैंने सब ट्यूटोरियल्स करे हैं, ब्लूप्रिंट मिला है तो वही चिपका दिया मैंने इसका। जो है यही है, वो कोशिश भी नहीं करो। और यहाँ पे ये कलर और एक चल रहा है, गियर अपग्रेड, गियर खरीदने के लिए अपग्रेड गियर, बस वही है। और ये है, मतलब ये बनाना था, सोच रहा था ये कहीं पे लग रहा था इसलिए मैंने बना दिया, और अभी लग नहीं रहा था तो सोचा कि बंद कर दो भाई, क्यों चलाना है। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो अभी उड़ा भी सकता हूँ इसे, कोई ज़रूरत नहीं इसका। तो बस यही है, ये छोटा वाला, और इसका भी मैंने अपग्रेड किए हैं थोड़ा बहुत। मैं सोच रहा था हाँ थोड़ा तो कर ही देता हूँ ना। ये वाला अपग्रेड किया है मैंने, मतलब ये पूरा खोल दिया। इसका एक और होगा बस, और डिपोर्ट्स होंगे यहाँ पे। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी इसका, बहुत पैसे लग रहा है, मैं उसका करूँगा पहले। और छोटा पहले भाई, छोटे छोटे कर दो, टेंशन हटाओ, उसके बाद बड़ा कुछ करूँगा। मतलब ये जो बड़ा है, ये जो हमारा मेन बेस है ना, इसको हम लोगों ने सैटेलाइट से बुलाया था, बाकी सब तो हमने जस्ट खड़ा कर दिया अपने इस बेस के हेल्प से। तो वही है जो मैंने किया है अभी के लिए। और यहाँ का जो टेलीपोर्टर था वो हटा दिया, मतलब टेलीपोर्टर मतलब जिप लाइन यहाँ पे हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे लगाना था, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्ट करके यहाँ का जिप लेके यहाँ पे आ जाता, और यहाँ पे ये ले सकता था, कि यहाँ से जाने में बहुत ही डिफिकल्टीज हो रहे थे। तो हाँ, जिप लगा दो भाई एक बार में। हाँ, that would be much more easier for me, so I have done that. These were the things that I wanted to speak with you guys, or to keep in the record. Yes, let's focus on the story, and I will be approach with caution. And I will be going, and I will be muting myself. और एक चीज़, लास्ट चीज़, देख रहे हो पिंग, they have worked on this server greatly, they have done a great work। क्योंकि पहले भाई 300 जा रहा था, 300, 400, 800, लोड बैलेंसिंग नहीं था उस सर्वर में, एशिया सर्वर में। अभी है, बहुत अच्छा से है। ठीक है भाई, चुप हो जाओ। तो डेवऑप्स भैया जो भी है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोड बैलेंसिंग के लिए, बहुत अच्छे काम किए वो लोग। थैंक्स फॉर द लोड बैलेंसिंग स्टफ, इट्स रियली हेल्पिंग मी और यू, एवरीवन ब्रो, एवरीवन जो भी खेल रहा है गेम। पहले तो भाई अगर स्ट्रीम्स देखोगे मेरे, पहले स्ट्रीम अगर देखोगे, वहाँ पे मैं, मतलब फर्स्ट स्ट्रीम आई गेस, वहाँ पे मैं बार, अरे भाई तो चुप करेगा। वहाँ पे मैं हर समय यहाँ पे तो तुम्हारा ठीक है जो भी है,
यहाँ पे तो फिर भी सही है। अभी अभी ओके, आई एम फोकसिंग नाउ। क्या बोल रहा था? हाँ, High threat hostile. Approach with caution. तो मैं जो बोल रहा था, हाँ, पिंग वाला, पहले वाले स्ट्रीम में देखना भाई, वो कुछ भी था भाई, 300-400 जा रहा था, कभी कभी 900 डिस्कनेक्ट कर दे रहा था। मतलब डिस्कनेक्ट मतलब ओह माय गुडनेस। Still waiting for something? हाँ अभी सही है। तो अभी के लिए देख रहे हो 83 आ रहा है, 80 अराउंड 90 से नीचे ही है हर समय, 90 से नीचे ही है हर समय। ब्रो जब मैं पहली बार डाउनलोड किया था गेम, मतलब ऑब्वियसली मैं 4 दिन लेट था, पर जब डाउनलोड किया था, मेरा फर्स्ट स्ट्रीम देखना, मैं भाई 400 800 900 चल जा रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट भी हो रहा था स्टोरी के मिड में। मैं सोच रहा था ना डिस्कनेक्ट कर दे, मेरा स्टोरी मिडिल पूरा पहले से चालू होगा। मेरे को वैसे नहीं होता, मतलब एक कट सीन, मतलब जब स्टोरी में कुछ एनिमेशंस हो रहे हैं मिड स्टोरी में, अगर तुम डिस्कनेक्ट हो जाओ तो कट सीन्स में तुम्हें पूरा पहले से देखना पड़ता है, तो वो एक एनोयंस होता, मुझे फिर से स्किप करना पड़ता। तो दैट वुड बी अ वेरी हेक्टिक थिंग टू हैपन विद मी, दैट वुड हैव हैपन टू मी। पर हाँ होपफुल थैंकफुली नहीं हुआ। आई एम वर्किंग ऑन माई इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, ओके दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रीमिंग एंड ऑल। तो यही है जो है, ये अच्छा चल रहा है अभी, अभी तो अच्छा ही चल रहा है। डेवॉप्स जो भी है वहाँ पे काम कर रहे हैं भाई, हेड्स ऑफ ब्रो। कहाँ से कहाँ ला के रखती है, 300 से डायरेक्ट डायरेक्ट to 82, damn, it's a great thing bro, loving it. Can't build this database में ये okay. जो भी है अच्छा है, चलो let's focus on the story now. High threat hostile. Approach with caution. बहुत स्मूथ भी हो गया है, that's the thing. पिंग के लिए, पिंग, I am obviously talking about the ping. Ready to go, Endman? Oh, me three! I'm totally ready to take on 10 Angoloi in a single battle. What about you, Tata? Fully rested? Hey, Discord-এর একদম ফাঁকের ওপর, লেফট ফাঁকের ওপর তোর একটা ব্যাক বাটন আর ফরওয়ার্ড বাটন দিয়ে দে। আমি ওখানে যেতে কি হট করে মাত্রকে বললো। ও হ্যাঁ আছে। Since the tactics manual doesn't have any rules against fun, how about we play some icebreaker games? どうかな? Farley, a thing that's just as unreliable as my memories. Supervisor Perlica, this is the final stretch of the mountain path. Pass through this place, and you'll reach the family apartments of the UWST crew. We don't know what's happening in that place. Let's hope everyone's all right. वहाँ से यहाँ तक एक जिप लाइन और देना पड़ेगा, पर कैसे? मेरा यहाँ का एरिया का पूरा कैप्ड है, एज यू कैन सी 12 से 12 भाई,
नहीं दे सकता यहाँ पे कुछ भी। बाय द वे मैंने यहाँ पे जिप नहीं दिया है, वो दूसरे कोई प्लेयर ने दिया है, तो थैंक्स फॉर दैट जो भी जिसने भी दिया है अपना प्रेशियस ये पॉइंट एक्सपेंड करके। मेरा भाई पूरा ऑप्टिमाइज्ड है, यहाँ से पकड़ूंगा यहाँ 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 यहाँ, ऑब्वियसली यहाँ से पकड़ के सॉरी यहाँ पे जाना है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ, और अगर चाहो तो यहाँ से पकड़ के यहाँ यहाँ पे उतर जाना, यहाँ से यहाँ पे आना है तो यहाँ पे टेलीपोर्ट करना, इसको लेना, वॉकिंग डिस्टेंस ब्रो, ये भी ले सकते हो। यहाँ को लेके यहाँ पे आना, यहाँ जाना, यहाँ से मतलब जिप लाइन पकड़ के यहाँ पे आ सकते हो। मतलब पूरा ऑप्टिमाइज्ड है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता अभी। ऑब्वियसली आई कैन डू वन थिंग, मैं यहाँ का जिप लाइन जो है ये तीनों इनफैक्ट हटा सकता हूँ। दैट मच आई कैन डू। ये वाला जो 3 है ये कुछ काम नहीं कर रहे, ये काम धंधा नहीं है इन तीनों का। मैं वहाँ से लेके यहाँ पे लगा सकता हूँ। दैट आई विल डू अगर याद रहे तो नेक्स्ट स्ट्रीम में। ऑब्वियसली आई एम फोकसिंग ऑन स्ट्रीम नाउ। ओ भाई लुक एट दिस, हाउ टू फिल्टर इट, मतलब दूसरे लोगों को कैसे हटाऊं। रोटेट कैमरा, एग्रेड, टॉगल कैमरा, तुम लोग यहाँ पे आओ, बस रुक जाओ। अरे भाई तुम लोगों को फ्रेम में आना ही है क्या? एनपीसी शो एनपीसी ऑफ, हाँ यहाँ पे होगा। नहीं सेव कर सकता मैं। ये काम क्यों नहीं कर रहा? शो एनपीसी है वैसा कुछ आइडल। Since the tactics manual doesn't have any rules against fun, how about we play some icebreaker games? どうかな? Hello? Hello? Does anyone copy? It's been a while, Endman. Are things Hello. working out for you? Hello. Good. Then I caught you in time. I hope you still remember the user instructions for Tata. You're calling it Tata too. It's a super cute and lovely name, right? Your habit just rubbed off on me. Back to business. You used Tata in dangerous ways, but that data proved crucial. I tweaked a few performance parameters during repairs. Let's just say, I gave it an upgrade.
You can now use Tata normally to scan for blight cores. Now, I'll remind you that my baby bot is a delicate prototype, so you better take care of it. Do whatever you can to keep it safe. Great. Now we don't have to worry about the blight blocking our path anymore. Don't celebrate just yet. We should play things safe and avoid unnecessary power consumption. First, connect Tata to a Protocom signal tower before scanning the entire area for blight cores, just like what you did at the science park. I remember that a signal tower with the same parameters has been deployed in our next destination, the Origin Load Spring. That's right. I was just about to tell you that. Oh, please, please, please take proper care of Tata. Make her mommy's got a ton of tests in store for her wobbly baby bot. Don't worry, we'll definitely keep it safe. Let's confirm the map data for the next area before we start moving. We're like the Abery Quarry. The load spring was once a cornerstone that made Valley 4 a success. But the place was largely abandoned after the crisis that took place 20 years ago. There's a mining camp to the south. Family members of the UWST crew live here. The fork here leads to the old mines and the logistics area respectively. In the past, almost all of the Originium used by Valley 4 was supplied by these mines. Local mining byproducts were also used as raw materials by the science park. The logistics area used to be the main mineral ore transport route. The early freight road was built here as well. Together, they established connections to multiple frontier regions of the valley. Between these two areas, the UWST marked out a containment zone that they called the Cradle of the Ages. The place still bears the scars of a past disaster. Once we get through this area, the power plateau shouldn't be far. Why is Tata so excited? Is it because of its functional upgrade? Do you want to try it out? I totally understand how you feel. Every time I learn a new move, I start itching for my next fight with a true master. Of course I can. Tata's emotes convey a rich variety of fine emotions, you know? Come on, Tata. Show us what you've got. You're happy to be traveling again. That's what you're trying to tell us, right, Tata? Ooh, and I think Perlica's emote is trying to tell us this. Enough, team. We should get moving. Careful. Breaker camp right ahead. Campsite proves that they've been in this area for quite some time. These land breakers are camped right between the Originium Science Park and the Origin Load Spring. Are they trying to block the way? Look! Over there! Whoa! So many
anchors. I thought you'd only see something like this up north. Anchors. Fiona, give me a scan of the area ahead of us. Focus on the distribution of ankyloid hosts and clusters. I'm reviewing the data as we speak. Wait, is there something wrong with the readings? There isn't a lot of ankyloid in this area. What is it, Perlica? It only took a single anchor to deal a major blow to our hub base. This area has 3. The low local ankyloid count hardly makes sense. We might be running into a serious problem, Endman. What are we up against exactly? Those anchors took out the freight road of the logistics area. We need to find another way to reach the power plateau, team. UWST logs mention a vertical shaft in the Cradle of the Ages. It should grant passage to the power plateau, but the cradle has been sealed away for 20 years. The Cradle of the Ages. That was where the Endmen... You're Endfielders, right? Yes, we are. You seem troubled. Do you need help? I'm Alia. We were supposed to salvage the area for supplies, and then all those landbreakers showed up out of nowhere. We were lucky that a breaker from the pack saved us, but the enemy still outnumbered us. I found a chance to make my way here, and I wanted to see if I can find help. A breaker helping the UWST? Can it be... It's quite possible. Take a breath, young lady. Tell us how to reach the rest of your group. We'll head over there immediately. Oh, thank Talos. Use that elevator over there to reach them. I'll probably get in your way during battle, but I know this place pretty well. I'll figure out a way to return to camp and get more reinforcements. Please, go and save the rest of the crew. You'll need to find out what actually happened. Let's focus on rescuing the others first. Unlike the Blight and Rifts, Orleans aren't that dangerous. Someone actually built an elevator here. Seems like an old facility they had before the freight road was completed. Lucky for us, it's still working. Wolfguard do this? He should be the only member of the pack who received the mission. Let's hope he has some intel about those unusual anchors. These trails look fresh. Try scanning them and see if we can find out anything else. Let's follow these footprints. They haven't gone far. We should be able to catch up.
that one? Need me to do... Watch your step, people! I have trouble facing Victory strategy, engage! Take cover, now! Area sweep! Let's team up! None shall live. Just as I predicted. We've done it! Hope you're not tired, Mr. Dally. Wasn't expecting anything less. Coraline. A thing that's just as unreliable as my memories. Yeah. Looking for me? Now that I've been promoted, my new authority level should give me a one-on-one annual review meeting, right? Good. Let's take a walk. I need some air. Solid reference. Are you scared? Right here. You are the worst prey I've ever seen. Papa molle. Quit staring, it's over. You carry the food back ASAP. And you, tell Mr. Yue we got the mats back. You carry the wounded. As for you... Erlika, you're already here, and I was... Hold on. Is it my dream or the admin is here? Why is the admin here? You know each other or something? Didn't Alia mention someone from the pack? It can't be this teensy-weensy girl, right? Teensy-weensy? I am Rosina Wolfberg-Lupino, prima elite of the pack, future capo, and strong arm of the dawn. Remember this well. This is Rossi, Wolfgard's younger sister.
Both are members of the pack and longtime partners of Endfield. Rossi usually spends most of her time at the pack dealing with family issues. It's all because my irreliable brother, who neglects family duties. Someone had to clean up all the mess. I'm so sorry, I hope Catalu didn't give you any trouble. If I ever got my hands on him. Thank you for helping the local crew. But why are you here? I don't remember asking the pack. Well, it's, oh, right! It's private business. I got some private business with Catalu. People from Up Team C7 told me came to Valley 4. And also cause I heard the enemies around. I heard something about the enemy's awakening, so I sneaked. I intended to pay you a visit. But then I found that the locals here needed help. The Lupino family won't just stand by and do nothing. I got a lot of questions to ask, but did you really lose your memories? It's all true then. You really can't remember those legendary things you did before? You unleashed your Originium Art 100 years ago and left the Aurora tell us too. You forgot about that too. They say Talos 5 shattered because you threw it into the ether side. You remember that? Do you recall going deep underground alone, wiping out 2,000 anchors in one strike, and leaving a massive crater on the surface? Oh, that means you really forgot. How could this be? Oh, no. Sorry, just ignore what I said. The most important thing is that you are safe, We can talk about the Endman later, Rossi. Can you give us a sitrep? I rushed to this place when I saw the anchor fall and ran into a UWST crew on the way. I joined them and went to their camp. But a few of the salvaging crew didn't return. I got a little worried, so I came out here to look for them. And you saw what happened next. Things are super duper busy at the camp. The locals really need all the help they can get with everything. Once they learn you are here, they'll definitely feel a lot safer. Do you have anything on the overall situation of the Origin load spring? There aren't that many Angeloi here. Something doesn't add up. This area was already a total mess when I arrived. As for your concerns about the Angeloi, it baffles me as well. Just remember something. There's a search and rescue crewmate at the clinic. I think he's called Alphas. His SAR team combed through the old mines, so you should have plenty of intel to share. I'm about to help the crewmates move the supplies back to camp. I can take you there. That'd be great.
people here don't look panicked at all. Many experienced miners settled here after retiring. I believe they helped keep the situation under control. So, did Catello ever tell you about me? I'm just really curious about what he said about me. I don't want him to give our admins some weird impressions. Don't worry, he's not a talker. We are here. This is the clinic of the mining camp. You made it back! And there's not a scratch on you! Wonderful. All thanks to our admin and friends. Is Medical Officer UA inside? He just took a 5-minute break, and he's already back at work. The clinic used to be pretty empty with hardly any visitors. But it's now been filled with injured people, and we're running out of beds. I can imagine. Our medical staff at the hub base also have their hands full. Can your surgeon handle all this work on his... Surgeon Yue has been here for years, and he hasn't asked for help. He's an experienced medical officer from the HAS, and his treatments always work. We have faith in him. You can find him in the clinic right now. I'm gonna stick around and help our nurse. Extra hands will help get things done. Okay, get to it. The people here need your help. All right then. You guys head in and ask around. I will talk to the crewmates we just saved. They probably have some clues about what's going on outside. No problem. We'll split our forces and share any new findings we come across. We'll help Of get course. Perlica, Chen, and Administrator. Catch you later. जो रहता है Are you Medical Officer Yue? I'm Supervisor Perlica of Endfield Industries. Alia told me that you're in charge of directing work at this place. I am. So, you're Enfielders? Good. Since you managed to reach this place, can I assume that situations in other areas are getting better? That is a safe assumption to make. But as long as that rift stays in the sky, we remain in a state of crisis. The Ether Rift. The situation at the mining camp is less than optimistic. They say I'm in charge. But when a surgeon is running the show, it says a lot about the place. I may not have the best skills for the job, but feel free to let me know if there's anything I can help you with. You'll find him in the clinic, second floor, the bed further in. Not too hurt physically, but he's pretty shaken up. Try not to say or do anything that might set him off. Thank you. Don't worry, we'll keep your words in mind. Excuse me. Are you Mr. Alphas from the search and rescue team? It's my fault. It's all my fault. We were in the cradle of the ages. That woman. She just flicked her hand and the anchors. I've never seen anchors of that sort. The shockwave hit the crew like a train, and then they crumpled over in an instant. Never got back to their feet. It's all my fault. I was the one who wanted to check out the cradle of the ages. Don't blame yourself. No one could have seen that coming. It's just something about that place felt wrong.
The angalloy made by the anchors kept swarming over there, but the path was blocked by a strange barrier. We couldn't get to it. So that's why we aren't seeing that many angalloy in the other parts of this area. I was injured by some angelos, so the rest of the team went on without me. It was too late when the shockwaves were suddenly triggered. And the shockwaves got bigger with every pulse. I had to run. I kept running and running, all by myself. The silver lining is that you made it back safely. What you learned out there will save many lives. But I didn't save any. Focus on getting better, Alphas. Plenty of people here need your help. You're right. I won't let their sacrifices be in vain. Shockwaves. Our database has no entries of any anchor-type entities capable of emitting them. He mentioned seeing a woman. Could that be... Neferith. Even if she's capable of directing the site of Anchor Falls, why did she go out of her way to strike this place with 3 anchors? Hello? Perlica, do you copy? Loud and clear, Rossi. What have you found? The survey team has returned with something special. Something that I think might help you out. But only one crewmate of the survey team made it back. He wants to see you in person. No problem. Fiona has shared the coordinates with me. We'll be right over. Unlike the Blight and Rifts, Orleans aren't that dangerous. Acquiring Arlene is our top priority on missions. I wonder what secret it hides. Unlike the Blight and Rifts, Orleans aren't that dangerous. Admin, you're here! This is Royal, and this is the admin I've mentioned before. So, Royal, go ahead and tell us what happened. The admin can definitely help. Really? Admin, will you go and save my friends and the team? Okay, so this is what happened. We were one of the first survey teams to be sent out there to look for survivors. There were 3 of us, me included. We knew the shockwave was a threat, so we got ourselves a 20-minute window of opportunity. Our task was to identify the danger zones, clear a path, and make things easier for the SAW crew and their rescue work. But we were too impatient and pushed too deep. We got really close to an anchor. Close to an anchor? Yes.
A senior mate of the crew said he saw an anchor fall with his own eyes in his last survey run. The barrier blocking the way to the Cradle of the Ages appeared after the anchor fall. We thought these two events were related. But then, the anchor started giving off shockwaves before we could even get close enough. Shockwaves? But you got back without a scratch. How did you pull that off? That's your key finding, Royal. Show our friends what you found. Well, I don't know what exactly happened. I just grabbed this branch in a moment of desperation. Here, this one. An Originium formation shaped like a branch. This branch suddenly glowed and everything around me flashed and, well, I didn't get a clear look of what exactly happened, but it managed to block the shockwave. Really? Does that mean we can use this thing to get rid of the anchor? No. This branch has gone inert. We just kept running and running, but the shockwaves demolished the road and, well, I was the only one who made it back. But I believe they're still alive. Perhaps they found other branches. Enman, please head out there and save them. I understand how you feel, but we must find a way that can reliably negate the shockwave. This Originium branch has a very unique structure. The only one capable of molding the crystal into this form is... The Endman's memories have not returned. There is no way for us to verify this link. I believe I saw something like this branch. Right in our very own camp. Really? If we can get a replacement, we'll be able to get close to the anchor. There's a living Originium sapling in the camp, growing on that platform over there. Granny Jenna has been taking care of it for 20 years. She definitely knows something. A living Originium sapling. Team, there's no time to waste. Let's talk to Granny Jenner. The sapling and the branches will be crucial for our subsequent actions. I'll take Royal to Surgeon Yue for his checkup. Please, people, please find my friends out there. The Originium sapling. The three Accordatores have been extremely cautious and meticulous with the vaulting of information related to the Administrator. I hope that Originium sapling can give us the answer we need. Looks like we've made quite the haul. As unreliable as my memories. What is this? It's so weird looking. I've never seen anything like this before. Can we play with it?
Don't worry, Tata. Be brave. The children are just curious about you. Yeah, we won't hurt you. Promise. And it just said yes to having fun with you. That's awesome! I say we leave Tata here for now. The UWST crew will help us look after it and make sure nothing bad happens. Is this the Originium sapling? It is. An Originium arts of such nature. This is your work, Endman. Just a fragment of a legacy from a time gone by. It is still too young and delicate. It won't give us the protection that it had once offered. The youths hardly look at it anymore. They probably couldn't appreciate what this sapling meant to us. Greetings. I'm Jenna, and I'm the one raising this little sapling. This sapling... is it from... History only remains in the memories of old folks like us. Time goes on, and barely anyone remembers what lay in the containment zone, or why it was called the Cradle of the Ages. Does anyone remember the massive great oak that grew at that place? Oh, how it sparkled with gentle glows as it sank its roots deep into the soil. The one who planted it told us this very place would become our new home. We depended on the oak to make our living and win our battles. The Originium veins created by its roots brought wealth, and an outpost started growing around it as prophesized. But then came the time when there was no choice but to destroy the oak ourselves. It was the day when Dark Asteron fell upon the valley. Hundreds of bodies twisted into a burning maelstrom that tore through the land. In its wake lay only desolation. Really? And Angelos? Yet the people achieved final victory, and the price they paid was everything. They detonated the great Originium oak, the giant tree that once gave them their homes. The shards of the great Originium oak tore through the core of Asteron. Of the massive trunk of the oak, only an empty hollow remains. The shattered Asteron now sleeps within it. What was once our cradle became a tomb for two bodies. Only the old miners still worry, fearful for the day when anchors come screaming down and wake the shattered Angelos. A day when Dark Asteron answers the distant call, rises from its tomb, reassembles its broken body, and cloaks the valley once again in a deathly shroud of red.
So, the containment zone between those anchors is a tomb for a giant ankylos? If this story were true, we would need to contend with more than that rift in the sky. That ankylos alone would destroy the entirety of Valley 4. And that is why we spent all these years taking care of this sapling. It is the only scion of the Great Oak. The oak once left many of its fragments and traces, but this tiny thing is the only one that survived. Perhaps it could save us again. This tree shall protect you. A day will come when this land becomes your home. Endman? Endman? Are you alright? You don't look so good. Do you need rest? Those anchors have been activated. Ankyloid? How did so many of them show up in such a short time? This is a very bad sign. We must act right now. Otherwise, the Ankyloid or even just the shockwaves could raze this place to the ground. Indeed. It's been years since I last saw this many anchors. Or the planter of the Great Oak. Let's go, Endman. We He must have faith in recognized these us, people. bro. Damn, obviously, but still, she recognized us. Damn. We've detected signals of a large ankyloid cluster in the origin load spring. The camp is also being attacked by ankyloid at multiple sites. Send us the coordinates. This camp lacks professional armed personnel. We must act quickly. Roommates are still evacuating. Tata! Oh, what about Tata? Wasn't expecting anything less. I knew. Help me! Great job, Tata. You protected these kids. Thank goodness nothing terrible happened. Chen, we must pay attention to Tata's safety. Okay, leave that to me. Feel the burn! Step down! I'll help you! We'll Just as I predicted. Wasn't expecting anything less. No force will stop us. This hardly counts as warm-up. Gonna knock it loose. On it! Wolves, let's feast.
They'll keep coming until we destroy the anchors. But we can't just let them attack the crew. Go and take care of the anchors, Anmin. Don't worry. I got this. Hey, it's dangerous. Have faith in her. Even with such conditions and zero memories, so long as everyone's united, great deeds can be achieved. Fratello, non potresti essere come l'Anmin? Si è intrufolata nella valle da sola. Landmin lo sa. Taci! Prima facciamoli fuori! Careful, Anmin! The shockwave. It has been blocked. Sapling? It's Originium. Did the Enman's Originium arts create this? We can use these saplings as we continue our path. Let's park Tata here. Too risky to take it along right now. Enman, look! I found an Originium branch here as well. We need to destroy that anchor first. Nailed it. There's a wall of light blocking the way. Is this the barrier Royal was talking about? You're probably right. When we destroyed the anchor, that barrier seemed to change as well. Yeah, a piece is obviously missing from the symbols. These anchors definitely have something to do with this barrier. The anchors are slowing our progress to reach the Cradle of the Ages. Indeed. We know little about the situation in this area. Stay vigilant, team. Let's go and take out the remaining anchors. Yeah, before that, I must. Enman, the safety gate to the old mines is back online. Head through to reach the second anchor. Okay. In the next stream. That is all for today. हम वापस आएंगे कल करने, तब यहाँ से ही चालू करेंगे. Since the tactics manual doesn't have any rules against fun, how about we play some icebreaker games? どうかな? Basically, it is what it is. So bye bye. You can't go there. Dang. No. Not one step up. चलो आज के लिए इतना ही. Give me this 30 now.
before that, I hate fools who like to micromanage. Thank goodness you're not one of them. Before I end the stream, let's upgrade. The pack hunts with purpose. Only the quickest paths to victory will do. Takes this one again. A strong team is one without... So this is what an elite debriefing looks like. Truly eye-opening. Echo. এটা আমি ফর্ম করে নিতে পারবো। ক্লোজেস্ট টেলিপোর্টার আছে তো? তো জাস্ট এখান থেকে এইটুকুনি। যাই হোক, tomorrow I will continue the story.